यस चलिए वेरी गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स आई वेलकम यू ऑल टू अनदर सेशन ऑफ द सेक्रेटरी प्रैक्टिस 12वीं सेक्रेटरी प्रैक्टिस के एक और सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मार्केट। क्यों भाई इतना सन्नाटा क्यों है सुबह सुबह? पंखा लाव रहे थे, आंघोळ करून यायचं शिंदे, आंघोळ करून यायची। तुझ्या बाजूला स्नोमॅन बसलाय आणि तुला थंडी वाजते असं कसं? ए ओमकार बस की गप, काय तुला 2-2 मिनिटं? चलिए अबे so we started with the chapter we started with the chapter थोड़ा कम ही कर बस। so we started with the chapter that is called financial market. financial market ये chapter हमने शुरू किया है जिसमें अब तक हमने मनी मार्केट के बारे में डिस्कशन किया था। we have started and discussed the money market part. after the money market in today's set of discussion we'll be starting with the discussion on capital market. Okay, the financial market in India is classified as money market and capital market. Hi na, it is classified as money market and capital market. Now in case of money market, the funds which we raise are for a period of less than 1 year. So money market is a market for short term financial requirement or short term fund requirements. But in an organization, do we just have working capital requirements? No, we also have fixed capital requirements. In a business, we have seen in corporate finance there are two capital requirement. One is fixed capital requirement, another is working capital requirement. For establishment, expansion and diversification of an organization or for purchase of the capital asset into the business, what is required, Bale? Which capital is required? The capital which is required is Ane. What is required is fixed capital. And fixed capital is required for short term or long term? It is required for long term. Hi Anna. On the contrary, the capital which is required for the day-to-day working of the business is called as working capital. And working capital is required for Drushane short term. Okay. The fixed capital is required for long term, whereas the working capital is required for short term. Okay. Now understand the point. When we say short term, it might be for a period of less than 1 year, and when you say long term, it is for a period of more than 1 year. Let's say 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, 25 years. Hi Anna, right? Silver jubilee, golden jubilee, 25 years, 21 years, 22 years, so on, right? So the fixed capital requirement is for long term. So we cannot shift to the money market for raising the capital, as the money raised in the money market is for a period of less than 1 year. So we need to find out some other market where we can raise long-term funds, and the market which regulates and coordinates the investor and the borrower for the long-term funds is called as capital market. So what is money market? Money market is an arrangement. Money market is an arrangement where the lender of the fund, that is investor and borrower, meet, and the fund trading is in for a period of less than 1 year. Arrangement where the investor and the borrower meet and the fund arrangement is made for a period of more than 1 year for a long term, it is called as capital market. Come to point. It is a market for borrowing and lending long term capital required by the business enterprise. The financial assets dealt with in the capital market have long term and indefinite maturity period. Indefinite मतलब हमने अभी preferentials के बारे में पढ़ा, debentures के बारे में पढ़ा. Do they have a fixed time period? Only कैसे गए हो? तो हो कैसे कर रहे हो? कशात पण हो का? No. It does not have a definite period. Equity shares are permanent source of capital. Equity shares are permanent source of capital. But other than equity shares, only the deposit chapter आने वाला है राउंड में, अच्छे से ध्यान करो. तो deposit have a fixed time period of 6 months to 36 months. But in case of bond, but in case of term loans, but in case of preference shares, in case of debentures, they do not have fixed period. And shares carry dividend and debentures carry interest. Okay.
and they do not have a definite period. Debentures can be issued for a period of 3 years. It can be issued for a period of 6 years. It can be issued for a period of 9 years, and it can be issued for a period of 10 years, and it can be issued for a period of 21 years also. So in this particular case, what we see is the maturity period is indefinite. The maturity period is indefinite. The capital market is the core of the country's financial system. It helps in mobilization of the resources. किसी भी देश का कोर यानी हार्ट जो है वो कैपिटल मार्केट होता है. डे टू डे वर्किंग और शॉर्ट टर्म कैपिटल यानी मनी मार्केट इज पार्ट एंड पार्सल. मनी मार्केट की रिक्वायरमेंट कब होगी? जब बिजनेस एस्टेब्लिश हो. हमें वर्किंग कैपिटल कब लगेगा मुझे बताओ. मान लो कोई आइलैंड है जिसके ऊपर कोई भी नहीं है, नो वन इज देयर. डू वी नीड वर्किंग कैपिटल? नो. बट वी सेट अप अ फैक्ट्री आउट देयर, देन विल बी रिक्वायरिंग वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के बाद होती है. कंट्री में पहले इंडस्ट्री सेटअप करना पड़ेगा. सेटअप करने के बाद मनी मार्केट का रोल आता है. प्राइमा फेसी रोल किसका आता है? कैपिटल मार्केट का. प्राइमा फेसी रोल किसका आता है? कैपिटल मार्केट का, क्योंकि कैपिटल असेट कहां से क्रिएट होंगे? हमारे कैपिटल मार्केट्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए कहा जाता है दिस इज द कोर ऑफ द इकोनॉमी. एज पर सेबी, कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी शेयर्स. For long term debt and equity shares. Now, what is a long term debt? What is a long term debt? Chaudhary, what is a long term debt? Bolo. Devgade, Snehal, what is long term debt? Aishnavi, what is long term debt? What is long term debt? Tejaswini, Anjali, debentures नहीं. What is long term debt? I'm not asking source of long term debt. सीधा कॉमन. तो मैं तुम्हारे को कोई नया शब्द बोला ऐसे ऐसे कोई कुछ करते समझ में कॉमन सेंस लगा. लॉन्ग टर्म डेट मतलब डेट which has a maturity period of which has a period of more than 1 year is long term debt. More than 1 year is long term debt. Less than 1 year is short term debt. In the capital market, comprising of both of equity and debt are issued and traded. This also includes private placement of the debt and equity as well as organized market like stock exchange. What we see in the capital market of India, we have both sectors. We have the organized sector and we have the unorganized sector. इसके बारे में इकोनॉमिक्स में डिटेल में डिस्कस किया हमने, आया ना? In the financial market and the capital market, we have both sector. We have the organized sector and we have the unorganized sector. Organized sector includes stock exchange, आया ना? जहां पर कंपनी अपने शेयर्स क्या करते हैं? लिस्ट करती है. The company gets its shares listed on the stock exchange and those shares are traded on the stock exchange. Okay, nine. Okay, nine. बरोबर. So the shares of the company are listed on the stock exchange, and stock exchange are the examples of a regulated market where the securities issued by the company are traded. Okay. An unregulated market includes private placements. क्या एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को इश्यू करती है? नो. व्हाट आर द मेथड्स फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर प्राइवेट कंपनी? पार इश्यू ऑफ शेयर्स मेथड फॉर अ प्राइवेट कंपनी. प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एंड राइट इश्यू. आठवता का? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एंड राइट इश्यू. ऐसा मत करो, बाद में सब मुझे बोल. क्या तुझे थोड़ी बोल रहा, तुझे थोड़ी बोल रहा हूं. बाद में बोलोगे मुझे मुझे कुछ नहीं आता, मेरा कोई प्रिपेयर्ड ही नहीं है, बिल्कुल कुछ 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 भी प्रिपेयर्ड नहीं. राउंड 3 में ऐसा मत कर, अच्छे से प्रिपेयर करो. हाँ ठीक है. One of the important functions of the capital market is to provide ease to the transaction for both the investors and the company. बोथ इन्वेस्टर और कंपनी को ईज प्रोवाइड करने का काम जो है, इन्वेस्टर और कंपनी को ईज प्रोवाइड करने का काम जो है वो कैपिटल मार्केट करता है. अनिशा, गेट लॉस्ट. इफ यू जस्ट कम टू क्लास टू सिट एंड चैट एंड टॉक एंड गॉसिप, जस्ट गेट लॉस्ट. नाउ लेट्स लुक इनटू द फीचर्स ऑफ द कैपिटल मार्केट. नाउ ओवरऑल आइडिया इज क्लियर. द फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट which fulfills the finance requirement or capital requirement of a business.
The financial market is classified as money market and capital market. The money market is a market where funds are raised for a period of less than 1 year or short term, and capital market is a market where the funds are raised for a period of more than 1 year, or you can say long term. Now we are clear with the overall idea that the capital market is a market where the funds are raised for a long period. Now give me examples of the securities which might be traded or instruments which might be traded in the capital market. Raise your hands, those who wish to answer. Okay, Anisha, give me one example of any instrument traded in the capital market. Shh. हाँ, अनिशा एक ही अपनी क्लास. Debentures. रिया. Bonds. Okay. Sakshi Chaudhary. Instruments traded in the capital market. Long term bonds आणि bonds वेगळे कसे बाळा? Long term shares कुठून आलेत बेळा? बोय कहाँ से लाए तुम long term shares? Short term shares? Stock? कौन सा opening या closing? इकडचं तिकडचं ऐकलं ना मग असंच प्रश्नाचे उत्तर येतं. आपल्याला जे माहिती तेवढंच उत्तर द्यायचं. आता सगळं परत करस्पॉन्डन्स सगळं एकच व्हायचं आपला. ऑल इन वन. एनी इन्स्ट्रुमेंट सांग लवकर. इक्विटी शेअर. इक्विटी. नीड बस. गार्डन में बैठेगा तू? सर थोड़ा लाम. भंडारी तो अकेले बैठे यार. काय रोज को रोज चिपकना, कोई तो भी चाहिए चिपकने को. कुछ बोलूंगा तो फिर बाद में आगे अकेले बैठते जाते. हाँ देवगटे. डिपॉजिट्स. वाह वाह वाह. दीक्षा अग्रवाल. हाँ preference shares, right? Equity shares, preference shares, deposits, bonds, long term borrowing, these are all government securities. Wow, nice. These are all the instruments, deposit receipts, these are all the instruments which are traded in the capital market. Now let's just quickly look at the features of the capital market. So what are the various features of the capital market? First, it acts as a link between the investor and the borrower. It acts as a link between the investor and the borrower. For example, say Apple INC. क्या? मैंगो INC नहीं रे, एप्पल. मैंगो कहाँ से आया बीच में? खाने को मिले नहीं. ककड़े डालू क्या? ठीक है, ओके. तेरी इच्छा. तेरे को बुरा लग रहा काकड़े ले. काकड़ी INC. बस समाधान. अच्छा चल, काकड़ी एंड चोमू INC बस. जाओ. काकड़ी Kakadi INC, an international brand of Kakadi, producing iPhone, kicking K phone, whatever, sure. Kakadi INC, let's say, is producer of electric vehicles. Now they are the producer of electric vehicles. Now being the producer of the electric vehicles, we all know that the electric vehicles run on petrol, diesel, gasoline, कौन सा? It runs on electricity. इसीलिए गाने आ रहे बिजली बिजली के. तो भाई काकड़ी आईएनसी जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोड्यूस करती है. अब इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रोड्यूस करने के लिए देयर आर वेरियस थिंग्स विच विल बी रिक्वायर्ड. फर्स्ट विल बी रिक्वायरिंग अ फैक्ट्री.
a setup of the factory where you'll just assemble the entire vehicle and produce the vehicle. Let's for example say the total investment required in the factory is of 5 crore rupees. Now Kakadi INC wants this fund for long term. अबे 5 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, क्या ये एक साल के लिए होगी, एक साल से कम होगी या लंबे दौर के लिए होगी, फॉर पीरियड लेट्स से फॉर 10 years, 15 years, 20 years. Let's consider this fund requirements are for 10 years. Now Kakadi INC has gone to money market and they have issued commercial paper of 6 months of 5 crore rupees and raised the capital and utilized it for the construction of the factory. 6 महीने के लिए कमर्शियल पेपर रेडी किया उन्होंने और फैक्ट्री के लिए वो पैसा इस्तेमाल किया. कोई भी कंस्ट्रक्शन 6 महीने में खत्म होता है क्या? नहीं. जितने टाइम पीरियड के लिए कमर्शियल पेपर लिए उतने टाइम पीरियड में तो फैक्ट्री की बिल्डिंग भी नहीं बन रही, उतने टाइम पीरियड में तो फैक्ट्री की बिल्डिंग भी नहीं बन रही. तो इससे बात तो एक तय है, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एस्टेब्लिश करने को एटलीस्ट 12 से 18 महीने आराम से लगते हैं इजीली. सो लेट्स फॉर एग्जांपल से इसके प्लांट को एस्टेब्लिश करने को बनाने को ही 12 महीने लग रहे हैं. अब कमर्शियल पेपर जो इन्होंने इशू किया है दैट इज फॉर पीरियड ऑफ 6 months. द commercial paper is issued for 6 months. The plant is taking time of establishment of 12 months. Do you think there is proper financial management? Corporate finance talks about finance management, money and money management. So there is lack of coordination between fund requirements and raising of the funds. So from where he should raise the money? He should raise the money from the capital market. After this we understood the capital which is to be raised should have adequate debt equity mix or capital structure, which says there should be adequate debt and equity mix. So let's say he has considered debt equity mix of 2.5 and 2.5, 50-50. So 2.5 crores he will be raising from debt and 2.5 crores he will be raising from equity. So the instruments which he can use in the capital market to raise the long term funds for let's say for purpose of 10 years is debentures. So Kakadi INC will issue debentures for a period of 10 years and raise the funds of 2.5 crore rupees for the period of 10 years. Then after that what we see is remaining balance of 2.5 crores. What is the other option for equity capital? Issuing shares. What are the permanent capital? Equity shares. So Kakadi INC has decided to issue equity shares of rupees 2.5 crore rupees to raise the equity capital. Yes or no? हाँ या ना? हाँ या ना? Right? So this is how they will be raising the money. अब इन्होंने क्या तय किया है? 2.5 करोड़ का क्या करना है? Equity shares. और 2.5 करोड़ का क्या करना है? Debentures. The point to be understood is where will these instruments be traded? इन इंस्ट्रूमेंट्स को कहां बेचकर ये 5 करोड़ रुपए रेज किए जा सकते हैं? That place from where and that arrangement from where we can raise this money is called as capital market. So can I say capital market is that market where the investor सिर्फ सेविंग वाले हो सकते हैं, सारे हमारे कर, और बोरोर कौन है? हमारा काकड़ी. Now the investors will invest in capital market and this capital market in return will invest in Kakadi INC, or you can say the capital market will act as an intermediate or a facilitator to ensure that the investors and Kakadi INC meet and fulfill each other's capital requirement and return requirement. So directly indirectly stock exchange में जब ये shares list होते हैं, इन्वेस्टर्स जो है स्टॉक मार्केट से शेयर्स खरीदते हैं, डिबेंचर्स खरीदते हैं. फिर ये सारा पैसा जो है कहां जाता है? ये सारा पैसा कहां जाता है? ये पैसा जाएगा काकड़ी के पास और काकड़ी जो है रिटर्न में क्या देगी? इंटरेस्ट और डिविडेंड. So can I say the capital market is acting as a link between the investor and the borrower? Yes. The capital market links the investor with the borrower of the funds. It routes the money from the savers to entrepreneur borrowers. तो हमारा entrepreneur जो काकड़े है इसके पास पैसा आएगा कंशुकले के पास से, बहुत सारा माल है, तो वहां से माल इधर कैसे आते हैं? तो with the help of instruments, right?
deals in medium and long term investment. Now understand what is medium term investment. What is medium term investment? अब किसी की मान लो अभी लड़कियों में से किसी की शादी 23-24 में होनी है, 23-24 में अगर किसी लड़की की शादी होने तो अभी कितने साल बाकी है भाई? 23 5 4 5 6 5 6 साल बस. अब मीडियम और लॉन्ग टर्म के बीच का फर्क समझो. Whenever investment is made for a period of more than 5 years, it can be termed as long term investment. But whenever investment is made for a period of 1 year to 5 years, 1 year to 5 years, it can be termed as medium term investment. अब आप में से किसी की शादी अगर 21-22 में होनी है, बताएंगे तुमको बड़ी गाय है, तुमको फिर भी 21 साल रुकना है. बॉयज की सब, गर्ल्स का छोड़ो, बॉयज को अभी तुम्हारी नहीं तो भी एलिजिबिलिटी 21 तक है नहीं, तो ज्यादा उड़ो मत, बैठो नीचे. अजून 4 वर्ष तक काही नक्की नाही. क्या तुम्हारा हो सकता, तुम 18 में एलिजिबल हो. सो अब बॉयज की अगर बात करें, बॉयज की एलिजिबिलिटी अब 21 साल तक है नहीं, तो हमारे इस्नू के डैडी ने सोचा है कि इस्नू की शादी करना है, लेकिन लगाओ पाइजे. तो इस्नू की डैडी ने सोचा है कि कितने दिन दूसरों की शादी में फेटे बांधेंगे, हमारे दूल्हे के भी सिर पे फेटा बांधा जाए. पुष्पा सोबत हिचा लगीन लगाओ पाइजे. तो डैडी जी ने इस्नू के लिए पुष्पा ढूंढ के लाई है, और इस पुष्पा के साथ इस्नू का लगीन है. लेकिन ये लगीन 21 साल का जब विष्णु होता, जब तक नहीं होता तब तक नहीं हो सकता. अभी 21 साल को और कितने साल है? 3 साल है. अब 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है. अब तेजस्विनी की तो अगली साल है, नेक्स्ट ईयर. 18 में है, लड़के समझदार रहते, तुमको अक्कल ही नहीं रहती लड़के. ऐसा है. सॉरी मैं क्या बोल रहा, मैं भी लड़कों में गाबड़े शाबड़े. कानून कहता है रे, कानून कहता. हूँ करना का पहिले मार कानून दाखा. हूँ ले छोड़ कर तेवढेच डोक्यात बघ काय नाही. मंगल सावधान. तो बॉयज को बच्चे अभी 3 साल, तेजस्विनी 1 ईयर, कांशुकले 10 वर्ष. नाही प्रज्वल लग्न नाही करणार, नाही ना, नाही. त्याला असं त्याला पियुष आपला प्रज्वलला बगर लग्नाचा आत्ताच हार्ट अटॅक यायला. सिंगल मेज आणि वो शादी विधी कर नको नको, नो रिस्क प्लीज. देख जरा हाथ लगा के देख, चल रहा है ना. अपना क्या है, अपना क्या है ना अपने पास कि खो गए. चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम. हाँ जिलबी. बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदलना जाना सनम. तो भाई क्या ये मेरा दिल है ना अपने पास, क्यों खो गयो, मिली गयो. ओके लाजू नको. हाँ तो भाई अभी होणारी नवरी पुढच्या वर्षी तेजस्विनी, तू लाजू नकोस. इनकी शादी पुढच्या वर्षी, अगले साल इनकी शादी है. तो इनके पास जो इन्वेस्टमेंट होगी, वो इन्वेस्टमेंट कौन से मार्केट में होगी भाई साहब? मनी मार्केट में. क्योंकि मनी मार्केट में पैसा कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया जाता है? फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर. फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. फिर उसके बाद शादी करेंगे हमारा इस्नू विद पुष्पा. लेकिन इस्नू और पुष्पा की शादी को अभी वैलिड बनाने के लिए और 3 साल इंतजार करना पड़ेगा इस्नू. सो इनके पिताजी कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? कैपिटल मार्केट में करेंगे. लेकिन कौन से इन्वेस्टमेंट करेंगे? मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म? मीडियम टर्म. कौन से करेंगे? मीडियम टर्म. 3 साल के लिए जो इन्वेस्टमेंट होगा दैट विल बी मीडियम टर्म. लेकिन हमारे कांशुकले जी के पिताजी जो है, कांशुकलेकर के पिताजी जो है, दे विल मेक इन्वेस्टमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years. So he will invest in bonds, James Bond.
आणू आपण तुझ्यासाठी. So they will invest in bond for a period of let's say 10-15 years, 15 वर्ष आरामात. Okay. So जीवनसाथी.com बर ठीक. प्रोफाइल टाकू नकोस तू. Capital market is a market where medium or long term financial instruments are traded. Though this market corporates, industrial organization, financial institution access long term funds from both domestic and foreign markets. Can you just give me example? Yes, Kolai Pothasure, tum batao. Give me example of long term investment in the capital market from the foreign markets. Foreign market, sorry, foreign market. ADR and GDR, काय रे? काय दाखवू? Next, presence of intermediaries. The capital market operates with the help of intermediaries. Capital market operates with the help of intermediaries, and intermediaries like brokers, underwriters, merchant bankers, collection bankers, etc. These intermediaries are important elements of the capital market. In case of a newly established company, when they issue shares, subscription की condition है. ए चिटकू लांबो ना दे ये ले फेविक्विक दे रहा लगा दे एक बार चिपका दे एक बार का. हाँ देव स्नेहल देव का. तो capital market operates with the help of intermediaries. काय चाललं काय नक्की? तुझ्या गळ्यात चिटकू का टाकून द्या असा? काय चाललंय काय? अच्छा, मिस यूनिवर्स के बाद मिस परभनी का क्राउन हम किसको पहनाएंगे? भाले ये तुला घालतो सर. Intermediaries are important. चलो भाई. Intermediaries are important in the financial market. किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो होते हैं इंटरमीडियरीज, एंड दिस इंटरमीडियरीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कैपिटल मार्केट. इनके प्रेजेंस के बिना कैपिटल मार्केट ठीक से ऑपरेट नहीं होता. इंटरमीडियरीज में आते हैं ब्रोकर्स. किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में जो ब्रोकर्स होते हैं, ए जीजा किसी भी स्टॉक एक्सचेंज मान थप्पड़ मारो तू. किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में जो ब्रोकर्स होते हैं, they help in buying and selling of the securities. Underwriters help to fulfill the subscription condition. Merchant bankers, collection bankers, etc. help in raising the capital in the capital market for long-term purpose. Are we okay and fine? Thank you so much.